ଏଠି କରିବି ଲାଗିବ। So social reform chapter is over. কি বলা social reforms? All the societies, all the organizations name you got, which were important in the history of India. Brahma Samaj, Arya Samaj, Young Bengal, Prasthana Samaj, then Rajaram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Keshav Chandra Sen. These are the few names. So today, next part, education under British rule. Next chapter. So father of English education in India, T.B. Macaulay. This is one of the earliest school at the time of British when they came to India. This type of schools were going on in our country. This is the real photo. This is the real picture taken by the William Adams when he came to India. पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स ऐसे टीचर का घर में रह के पढ़ते थे. Education prior to the British rule in India. This is a Hindu religion school and this is a Islam religion school. In ancient India, education institutions in ashrams were staged. Teachers taught pupils in the serene atmosphere away from the towns and cities. Okay. पहले के ज़माने में कहाँ पे लोग स्टूडेंट्स पढ़ते थे? गांव में नहीं, आश्रम में. आश्रम में पढ़ते थे. Where the students used to learn? In the ashram. Like this. This was the way teachers used to teach the students. यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक टीचर खड़ा हो रहा है, बाकी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं. Okay, this was the way of learning in the before stages. And this is another school, Maktab. Okay, this is called primary school for Islam. This is also was a school for Hindu religion. तो अलग अलग स्कूल होते हैं. हिंदू रिलीजन के लिए अलग स्कूल, इस्लाम रिलीजन के लिए अलग स्कूल. इन सब में ज़्यादातर क्या पढ़ाई होता था? Religious education. Okay, mostly religious educations were given in this type of schools. However, in medieval India, this system was disturbed due to the excessive war and invasion. ये सब स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट फ्री होता था. बच्चा लोग कभी 1 रुपये नहीं देता था, क्योंकि राजा लोग ही उसको उस सब स्कूल चलाने के लिए हेल्प करता था. Okay, mostly the kings used to help the schools by funding it. When the British arrived in India, they found that there were educational institutions for both Hindu and Muslim where education was given. Okay, when the Britishers came to India, they found that there were both schools for Hindu and Muslim. Hindu school and Islamic school. Islamic धर्म के लोगों के लिए मकतब होता था, मदरसा होता था, और हिंदू स्कूल्स को बोला जाता था पाठशाला व टोल. Okay, given there. For Hindu there were pathshala and toll, and for Muslims there were madrasa and maktabs. Madrasa and maktabs. These are the two types of schools which are found for the Hindu religion and Islam religion. ये सब वो नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला क्वेश्चन नहीं है. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रीलिम्स में यहाँ पे कुछ भी देने वाला क्वेश्चन नहीं है. The education given in these institutions were comprised of old knowledge and new knowledge was not included. At the basic level, religious text, primary school में ये सब पढ़ाया जाता था. Religious text,
लेटर राइटिंग, अरिथमेटिक वेर टॉट। जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5, जो हम लोग बोलते हैं 1 to 5 लेवल में बच्चे को ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। एंड हायर लेवल ग्रामर वाज टॉट, क्लासिकल लैंग्वेज वाज टॉट, लिटरेचर वाज टॉट, लॉ वाज टॉट एंड एस्ट्रोनॉमी। दिस वर द सब्जेक्ट्स टॉट एट हायर लेवल। From here starts chapter. At the beginning, Fort William College. This was one of the earliest college established in India by the Britishers. At the beginning, the British rule, they were not interested in educating the Indians. Obviously, उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये ट्रेडिशनल स्कूल था ये सब मर गया, खत्म हो गया। मतलब क्यों खत्म हुआ? क्योंकि प्रमोशन देने वाला कोई था नहीं। ब्रिटिश लोगों ने सब राज्य ले लिया। ब्रिटिशर्स बिगन टू टेक द किंगडम्स। द किंग्स वर नॉट देयर। देयर वाज नोबडी टू sanction the schools, to fund the schools. So finally these schools also died. Traditional schools slowly they began to decline, not died but they began to decline. So Britishers now needed people to work for them, but there was no one, because there is no school only. कौन पढ़ाएगा इन लोगों के लिए? Ultimately what they needed, they had to take the responsibility of educating the people. इन लोगों ने कोई मतलब वो नहीं था कि सिंपैथी के लिए इन लोगों ने ब्रिटिश ने इंडिया में एजुकेशन शुरू नहीं किया था। ऐसा कोई हम लोग को बहुत सारा मतलब उसमें बोला जाता है कि ब्रिटिश ने हम लोग को सिखाने के लिए पढ़ाया था। नो, बट दे टॉट द इंडियंस बिकॉज दे नीडेड एम्प्लॉयज। उन लोगों को क्या चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे स्कूल खोलना शुरू किया। क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि बार बार वो लोग लंदन से लोग लेके आ रहे थे। दे आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम लंदन टू वर्क हियर। तो वहां से लोग यहाँ लाना मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली ब्रिटिश को वो ज्यादा हो रहा था। एक तो वहां से आने का भाड़ा दो, यहाँ पे रहने के लिए घर दो, फिर यहाँ से जब वो लोग वापस जाएगा उसके लिए भी भाड़ा दो। और यस, चार्ज ज्यादा होता था। तो अल्टीमेटली द ब्रिटिश फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट for bringing people from England and making them work here. So finally they needed what? Those people who would work for them here at low wages. अगर एक इंग्लिश को 35,000 रुपीज उस टाइम का बोल रहा हूँ, आज का जमाने का देना पड़ता था, इंडियंस को वो लोग कम से कम 15,000 में हो जाता था। एग्जैक्टली एक छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, हो जाता था। तो उस टाइम में इंडियंस हैड टू बी पेड ओनली 500 रुपीज। Highest salary an Indian got in the government job was 500 rupees that time. Lowest from 60 rupees up to 500 rupees. This was the ratio paid to the Indians. Even the in the army they were paid only how much rupees? Indian army में कितना होता था? कल बताया था ना, 6 नहीं, 6 तो कम हो गया। ₹7। इंडियन आर्मी में जितना सिपाही था उन लोगों को ₹7 सैलरी मिलता था महीने का, और एक सूबेदार को ₹60 सैलरी मिलता था। द ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार होता था, जो हाईएस्ट प्रमोशन जो एक इंडियन को मिलता था, सूबेदार को ₹60 मिलता था। और हाईएस्ट जो सिविल सर्वेंट का पोजीशन में होता था इंडियंस, उसको मिलता था ₹500। Okay, but in bringing an Britisher from London needed 2,000 to more plus salary. सबसे कम सैलरी भी 2,000 रुपये देना पड़ता था अगर लंदन से लेके आ रहे हो तो। मतलब ग्रेट डिस्पैरिटी वाज देयर बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। 2,000 रुपये आज का 2,000 मतलब उस जमाने का कम से कम वो वाला अमाउंट होगा। लाख तो नहीं, लेकिन 60 to 70,000 प्लस। और इंडियंस को नियरली 20,000 रुपीज में हो जाता था। हाईएस्ट बोल रहा, हाईएस्ट सैलरी इन इंडियन रिसीव वाज दिस मच, बट ब्रिटिशर्स दे हैड टू बी पेड अराउंड 1 लाख रुपीज। दैट वाज मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट।
दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अगर हम लोग बाहर से लाएगा, अगर यहाँ का लोग रहेगा तो बाहर से लाने वाला का 5 लोग, 1 लोगों का सैलरी में यहाँ पे 5 लोग काम कर लेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, फाइनली दे फेल्ट द नीड टू ओपन स्कूल्स इन इंडिया। फर्स्ट दे डिड नॉट नीड द फील्ड बिकॉज वो लोग ला रहा था, अलग इंटरेस्ट भी नहीं था ये सब पढ़ाने के लिए, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, एकदम नो इंटरेस्ट। फर्स्ट दे हैड नो इंटरेस्ट टू ओपन एनी स्कूल हियर। सेकंड, they found very difficult to bring people from London to work here. They began to need local people. हर चौकीदार का काम तो बाहर के लोग आके करेगा नहीं, तो चौकीदार के लिए, पियोन के लिए, क्लर्क के लिए यहाँ के लोग चाहिए था। So Indians now began to be need. But what then? Second thing, ब्रिटिशर लोग लाने से नहीं होगा, वो लोग यहाँ का लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा। इंडियंस हुआ तो मतलब वो लोग यहीं का होगा, भाषा सीख लेगा, भाषा तो आता ही है। तो 3 प्रॉब्लम था, एक तो था सैलरी का प्रॉब्लम, सेकंड लैंग्वेज, नंबर 3 सैलरी में आ जाएगा ना वो तो। अदर मिसलेनियस, बहुत सारा झमेला होता था, मिसलेनियस। Therefore they needed someone who would work for them here. सबसे झमेला था लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ का लोगों को वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता था, वहाँ का लोगों को यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता था। So Britishers in the beginning they did not give any interest towards Indians. पढ़ाई के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था इन लोगों को, लेकिन धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुआ कि हम लोग को यहाँ का लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरी ऊपर गया था। कितना बार बाहर का लोग लेके आएंगे। So finally they decided to teach the people. That's why in NCERT what is given? Civilizing the natives, educating the nation. ये वर्ड ब्रिटिश ने यूज किया था। Number 1 reason I said why the British wanted to educate the people of India, because so that they would work for them. Number 2 reason was that they wanted Indians who would be loyal towards them. वो लोग ऐसे इंडियंस चाहता था जो वो लोग के लिए लॉयल हो। बाहर के लोग यहाँ के लोगों को पढ़ा के मतलब यहाँ के लोगों को ब्रिटिश के लिए लॉयल बनाना चाहता था। That's why educating the nation word was given, because Indians, so that Indians would not become anti-British. That's why they began to open schools. At the beginning of the British rule, they were not interested in educating the Indians, obviously. They were primarily concerned in trade. However, some measures were taken by British intellectuals. Slowly, British took the initiative. First initiative was taken by Warren Hastings. Calcutta Madrasa. He established the Calcutta Madrasa in 1781. क्योंकि उस टाइम इंडिया में ज्यादा बंगाल में उस टाइम में क्या रूल था, उसका नवाबों का रूल था, मतलब बंगाल इस्लामिक रूल था। तो इस्लाम धर्म को, और ज्यादातर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम पर्शियन और उर्दू का चलता था। तो इन लोगों ने पहली बार यहाँ पे आते ही इंग्लिश स्कूल नहीं खोला। दे डिड नॉट ओपन इंग्लिश स्कूल हियर। फर्स्ट दे ओपन कलकत्ता मद्रासा। Then in 1791, Jonathan Dickinson opened the Banaras Sanskrit College, very famous college in India. Banaras Sanskrit College. Now it is known by another name. अभी अलग नाम है इसका। Jonathan Dickinson ने 1791 में आके बनारस संस्कृत कॉलेज खोला to study Hindu philosophy and law. In 1800, Lord Wellesley established the Fort William College. 3 college name you have to remember: Calcutta Madrasa, Fort William College, and Banaras Sanskrit College.
नहीं, बनारस में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस this हिंदू संस्कृत कॉलेज was in बनारस. Written? Banaras Sanskrit College in 1791. Banaras Sanskrit College in 1800. Fort William College was established in Calcutta, but not for Indians. This was not for Indians. This was for the purpose of training the civil servants who would come to India. जो इंडिया में सिविल सर्वेंट्स इंग्लैंड से ट्रेनिंग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों को यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का फिलोसफी सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था. बट दिस कुड नॉट लॉन्ग फॉर लास्ट. 7 साल बाद इसको बंद कर दिया क्योंकि वो बंद हो गया वहाँ पे. फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन द लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडिया. क्योंकि इंग्लैंड में एक कॉलेज खोला गया, हिलबरी कॉलेज, सो दैट दे वुड. हिलबरी कॉलेज खोला गया इंग्लैंड में, तो यहाँ पे नहीं सिखाएगा, वहाँ पे सिखाएगा इन एंड रूल्स एंड कल्चर. दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश, हिलबरी कॉलेज. Next, right? More is there, okay? In 1817, next you write, Hindu college, first English medium college of India, you can say. For the Indians, it was established. First, you can say Hindu college. In 1817, Hindu college was established in Calcutta. Hindu college was established in Calcutta by David Hare. David Hare. This person he established the first, you can say, not first, but one of the first colleges. David Hare. Done? These are the some of the important colleges established in the initial years of the British rule. ये सब, these were called half-hearted measures. ब्रिटिश पढ़ाएगा बोल के नहीं शुरू किया था, उन लोगों को आदमी जरूरी पड़ गया था इसलिए शुरू किया था. लेकिन यहाँ तक कोई ब्रिटिश का कोई इंटेंशन नहीं था इंडियंस को पढ़ाना. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन इन इंडिया, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. लिख लो, हेडिंग राइट इट, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. फर्स्ट step towards educating the people of India. This was. Sir T.B. Macaulay, his photo is given, father of English education in India. ब्रिटिश सरकार ने इतना, अभी तक जितना भी कॉलेज खोला था वो इंग्लिश कॉलेज नहीं था, ये सब था ओरिएंटल कॉलेज, मतलब यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें खोला गया था. तो ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, बिकॉज इंडियंस दे वर नॉट एक्विंटेड विथ इंग्लिश एंड इंग्लिश दे वर नॉट एक्विंटेड विथ इंडियंस. देयर वाज अ गैप बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स दैट टाइम. ब्रिटिश लोग भी उस टाइम पे यहाँ का लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे थे, इंग्लिश यूज शुरू हुआ ही नहीं था अभी तक. पर्शियन यूज होता था, पर्शियन और हिंदी यूज होता था, बिकॉज दे वर एक्विंटेड, पीपल वर एक्विंटेड विद दिस लैंग्वेज. फाइनली फर्स्ट टाइम द क्वेश्चन केम, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, व्हाट लैंग्वेज स्टूडेंट्स विल स्टडी इन इंडिया. So this question came to be known as Anglicist Orientalist controversy.
Just now what you wrote it. Anglicist means those people who supported English education. Orientalist means those people who supported Indian education. ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश लोगों के बीच में दो ग्रुप हो गया. एक ग्रुप का ब्रिटिश लोग सपोर्ट कर रहा था इंडियन एजुकेशन को, एक ग्रुप का ब्रिटिश लोग सपोर्ट कर रहा था इंग्लिश एजुकेशन को. Now both wanted that their policy should be applied. That means Anglicists wanted English to be the medium of education, and Orientalists wanted इंडियन लैंग्वेज. मतलब यहाँ का जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो सपोज असम में असमीज चलेगा, बंगाल में बंगाली चलेगा, वैसा वाला उन लोगों को चाहिए था ना, वही लोकल लैंग्वेज. वर्नाकुलर, लोकल लैंग्वेज नहीं, वर्नाकुलर. वर्नाकुलर मीन्स अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड वर्नाकुलर. एंड दिस ग्रुप वांटेड इंग्लिश. Leader of this group was T.V. Macaulay, known as father of English education. And in this group, like Britishers like William Adams, Thomas Jones, they supported Indian language education. ये ब्रिटिश ग्रुप ने सपोर्ट किया इंडियन लैंग्वेज को, ये ग्रुप ने सपोर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज को. टीवी मैकॉले and many others were there. They wanted English to become the medium of instruction. So both side controversy went. This controversy started in 1813 and continued till 1833. So this period is called Anglicist Orientalist controversy. This period is called Anglicist Orientalist controversy. Okay, now see again come back to the presentation. See, first step towards the education of Indians was made when the British Parliament passed the Charter Act of 1813. Very important act. Current went. Sabita, can you hear? Sabita? Lipika, can you hear? Hi, sir. Okay. Finally, in 1813, the British government decided that yes, we have to educate the Indian people. And that's why 1 lakh rupees was very small amount. 1 lakh rupees was allotted for the education of Indians. The ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया इंग्लैंड में, बोला कि ब्रिटिश सरकार भारत में जितना भी इनकम करती है उसमें से 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को इंडियंस के एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा. बहुत छोटा अमाउंट था बट ओके. मतलब 1 लाख रुपए से मतलब पूरा इंडिया का एजुकेशन, मतलब उस जमाने में 1 लाख मतलब आज का कितना होगा, नियरली 20 to 30 करोड़. बट दैट मच ओनली 20 to 30 करोड़. एक 30 करोड़ में तुम्हारा पूरा इंडिया का पढ़ाई होगा. एक अच्छा कॉलेज भी नहीं बनेगा. बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी लग जाता है बड़ा अमाउंट.
So that much amount was given for the education of Indian people. So 1 lakh rupees was allotted that time. That means that time 1 lakh rupees, not today's 1 lakh rupees. उस जमाने का 1 लाख रुपए दिया था ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को पढ़ाने के लिए। बोला कि 1 लाख रुपए आप लोग जितना भी इनकम करते हो उसमें से 1 लाख रुपए आप लोगों को इंडियंस का एजुकेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ गया कि खर्चा कहाँ पे करेगा? नहीं, इंटरेस्ट कोई तो समझ गया, बट किस में? ओरिएंटलिस्ट या इंग्लिशिस्ट? एक ग्रुप बोल रहे हैं मुझे ओरिएंट इंग्लिश एजुकेशन दो, एक ग्रुप बोल रहे हैं नहीं मुझे इंडियन एजुकेशन दो। दोनों ग्रुप में झगड़ा हो गया। यस, दोनों वैसे हुआ था। But that means two groups were fighting over what would be the medium of instruction. Okay, British will give 1 lakh rupees, but to whom? But to whom they will give? They will give to Englishist or they will give to Orientalist? One group was demanding Indian education, another was demanding Western education. Finally, this fight was won by Englishist group, TV Macaulay. Language. Western education मतलब English education. English education. So they fought over the English education. That means like they were saying that here the local language should be the medium of instruction. One group was saying Orientalist. That's why Kolkata Madrasa was started. That's why Banaras Sanskrit College was started. Okay, Kolkata Sanskrit College was started. In this way, these colleges were started for Oriental learning. But another side, Hindu college was there, which was English medium college. So both were demanding our medium of instruction. So however, there occurred tussle over the medium of instruction. As Orientalists favored the study of Indian languages, while the Englishist wanted English to be the medium of instruction. Clear this point? This controversy ended when TV Macaulay finally ended. When TV Macaulay, the law member of Benting's cabinet, favored English to be the medium of instruction. Finally, this controversy finished when TV Macaulay, he recommended that English has to be the medium of instruction in India. Why? Next page it is given. Why? One point is given here. In this book he wrote, in his famous minute, this one you remember, who wrote the minute? Macaulay. ये मिनट नाम का किताब किसने लिखा था? ये आर्टिकल था, ये किसने लिखा था? तो मैकॉले ने लिखा था। तो ये मिनट का ही मतलब बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द मेन पार्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन. फ्रॉम हियर ओनली, on the recommendation of minute only, English was made the medium of instruction. Argued that Indian languages were not sufficiently developed. He said in TV Macaulay that Indian languages were not so much developed like the Western language. On the basis of his recommendation, Lord William Bentinck made English the medium of instruction in schools. So on this recommendation only, from 1835 onwards, this language was stopped. Vernacular language were stopped. अभी तक जितना भी ब्रिटिश सरकार पैसा दे रहा था वर्नाकुलर लैंग्वेज स्कूल को बंद कर दिया. Totally stopped, zero. And now it was decided that British government will give money only to English medium schools, colleges and universities. And promotion of local language schools, colleges was stopped. चल सकते हैं प्राइवेट, खुद से चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देगा. हो गया क्या? वो लोग चला ही नहीं पे इसके. नहीं है, वो टोल भी सर्वाइव किया, अभी भी तो है टोल सर है, क्यों नहीं? बहुत सारे हिंदू स्कूल से यहाँ पे भी है. हाँ, गोलपाड़ा में कितना सारा है, गोलपाड़ा साइड जाओ, ये अपर असम साइड जाओ, बहुत सारे. तो मतलब प्राइवेट से चला, ये लोग खुद से चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा. वो रूल बनाया, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, खुद से चलो. मतलब बाकी को क्या हुआ, गवर्नमेंट पैसा देता था. इंग्लिश मीडियम स्कूल जितना भी था वो सबको गवर्नमेंट पैसे देने लगा. Why English medium? This is given here. Why Lord Macaulay made English medium to be the instruction of India?
This is William Bending photo. Lord Macaulay outlined the three objectives of English education in India. Three objectives are given. Number one, he wanted a class of person. मतलब इंडियन ऐसा इंडियन बनाना चाहता था जो इंडियन में ब्लड में इंडियन हो, लेकिन टेस्ट बोलने में, सोचने में, करने में इंग्लिश हो. मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला. बट ब्रिटिश इन टेस्ट, opinion, moral, and intellect. He wanted a India of such persons where Indians would be Indians in blood, but in taste, opinion, moral, and intellect, they would be British. Number two, he wanted a class of interpreters. Interpreter means translator between Indians and the Britishers. Interpreters between the Indian rulers and the millions they governed. Number three, third objective was to obtain a cheap supply. जो शुरू से ब्रिटिश इसी के लिए लग रहा था. Cheap supply of Indian clerk for holding subordinate post in administration. For this, main target was this only. उन लोगों को ब्रिटिश सरकार में काम करने के लिए आदमी चाहिए था, इसके लिए उन लोगों ने लगवा दिया. हो गया. इसी के साथ इंग्लिश became the medium of instruction in school, and T.B. Macaulay is often called father of English education in India. Not officially, unofficially. Father of English education in India. वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में. वर्ल्ड याद रखना है, लेकिन वर्ल्ड का अलग है. वर्ल्ड का तो है ही नहीं कोई भी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. Father of English education in India, T.B. Macaulay. Thomas Burvington Macaulay, full name. Macaulay propagated the filtration theory. Very important. Okay, this one बहुत बार है यूपीएससी में. 2 बार से ज्यादा मिल चुका है मुझे क्वेश्चन. ये लेकिन पढ़ना, filtration theory. Who gave this theory? T.B. Macaulay. दिखा हुआ है नीचे. What is the theory given here? Macaulay propagated the filtration theory. Its full name is down filtration theory, or you can say filtration down theory. Full name. In which क्या था, मतलब डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था, मतलब ब्रिटिश लोग सिर्फ बहुत सिलेक्टेड इंडियंस को पढ़ाएगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं पढ़ाएगा. लिखा हुआ है. इन इट द ब्रिटिश थॉट ऑफ एजुकेटिंग ए फ्यू अपर क्लास इंडियंस, नॉट ऑल ओवर इंडिया. उन लोगों को सिर्फ काम करने वाला आदमी चाहिए, पूरा इंडिया को पढ़ा सिखाना नहीं है उन लोगों. और सेकंड उन्होंने लॉजिक दिया कि ये लोग जब पढ़ के निकलेगा, ये लोग आगे जाके सबको पढ़ाएगा. दो थ्योरी थे. एक थ्योरी में था दैट ब्रिटिश वुड टीच ओनली फ्यू इंडियंस हु वुड इन टर्न टीच द अदर्स. हायर क्लास एजुकेटेड पीपल through this way would get higher post in government service, and they naturally use their influence in controlling the masses. और जो ये लोग पढ़ के निकलेगा, ये लोग नौकरी करेगा, बाकी लोग जो करना है करते रहो. नहीं चाहिए, मतलब सरकार को नहीं चाहिए इससे ज्यादा. इन लोगों ने ये था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी. क्लियर? Who gave this theory? Macaulay. Bullet points, you have to write Macaulay name and this theory. Bullet points, what do you have to write? Father of English education. Second, ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि he is called the father of English education. कोई किताब में लिखा नहीं गया है कि he is called the father of English education in India, but most of the historians and most of the teachers, they say that he is regarded as the father of English education. टीवी मैकॉले का 3 चीज याद रखना है. फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. सेकंड, मिनट, who wrote the minute, and who gave the down filtration theory. Okay, these 3 points you have to remember. And when was the English Education Act passed? Write it. This also has come. When was the English Education Act passed? 1835. When was the English Education Act passed? 1835. Answer. नहीं, 1835. जो उसके आगे बोला, इंडियंस इन ब्लड एंड टेस्ट, उसने वही लिखा था मिनट में. मतलब हाईलाइट है वो, लिखा तो बहुत है, पूरा 100 से ऊपर पेज है. हाईलाइट, यू शुड नो ओनली द हाईलाइट.
वाई, क्यों क्यों इंडियन ब्लड बनाना चाहता है, वो सब वो लिखा हुआ था। मैकोलस मिनट। एजुकेशन का टीचर पढ़ेगा, हम लोग क्यों पढ़ेगा, हम लोग एजुकेशन का टीचर थोड़ी, हिस्ट्री का टीचर है। हम लोग का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट इसमें आता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली ये एजुकेशन का टीचर्स पढ़ाता है ये सब्जेक्ट। हिस्ट्री में सब पढ़ना पड़ता है, एजुकेशन भी पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ता है, हर सब्जेक्ट। वुड्स डिस्पैच, जिसने हायर सेकेंडरी या डिग्री में एजुकेशन पढ़ा था उसके लिए बहुत हेल्प हो रहा है, यही चीज पढ़े थे तुम लोग। वैसे एजुकेशन पाना सिला इवर वुड्स डिस्पैच मैं पाना एजुकेशन असेल तुम्हार असेल असेल पाना इवर वुड्स डिस्पैच के आगे और एक पॉइंट लिखा था, विलियम एडम्स रिपोर्ट when it was published. William Adams report. Write it, okay, all this. William Adams report. Name, write it. William Adams report. He was the, you can say, इसको ब्रिटिश सरकार ने काम, समरी समझ लो क्या था इसका रिपोर्ट। ब्रिटिश सरकार ने इसको काम दिया था कि आप पूरा देश में घूमो और बंगाल, स्पेशली बंगाल में घूमो और पता लगाओ इस स्कूल का हालत कैसा है। Before English education was implemented, this act was implemented. Before that, when the Englishist Orientalist controversy was going on, this person, he was given the task of touring the country and finding out how much, what was the condition of schools. पूरा देश में घूमने का टारगेट दिया था, स्पेशली बंगाल में घूमने का टारगेट दिया था उसको, और बोला था कि आप पता लगाओ इंडिया में स्कूल का हालत कैसा है, स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है, ये सब उसका रिपोर्ट लाने दिया था। तो उसका नाम जाता है विलियम एडम्स रिपोर्ट। रेडी? उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था, लिख लो। He gave the theory in 1830, this report 1830. According to him, in Bengal there were 1 lakh school। नहीं चाहिए इसे याद करने, वन पॉइंट्स के याद करने बोला है। और इनका रिपोर्ट को ही मतलब मॉडर्न एजुकेशन को वो बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है। इन्होंने जो जो रिपोर्ट में दिखा था, इन्होंने हम लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखे बहुत इंस्पायर हुए थे। He became greatly inspired by the Indian education system that was prevalent before British time, and he gave the report. नंबर 1 में दिया था कि इन्होंने बोला था कि ऑल ओवर बंगाल देयर वर 1 लाख स्कूल। सेकंड बोला था कि हर स्कूल में टीचर्स है और एक एक टीचर से, और जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, मतलब जो 10 में पढ़ रहे, 9 में पढ़ रहे, वो 1 2 का बच्चों को पढ़ाता है। ये उन्होंने रिपोर्ट दिया था। हर स्कूल में एक टीचर है मिनिमम बोला था। सेकंड बोला था कि हर जूनियर टीचर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ये दिस बिकम द आइडियोलॉजी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। असे हेटे तेव्हा आइडियोलॉजी बनाইছিলে কৈছিল যে যোনটা আগৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই যাব সিহঁতে একিনে আকৌ পঢ়াব লাগিব, এই আইডিয়োলজি দিছিলে। থাৰ্ড विंटर वेकेशन समर वेकेशन তেওঁ দেখা পাইছিলে, সেইটো आइडियोलॉजी তেওঁ ওলাইছিলে। विंटर वेकेशन समर वेकेशन जो स्कूल में मिलता है ना, वो आइडियोलॉजी भी उन्होंने निकाला था, इन्होंने बनाया था। कि उन्होंने देखा था कि बच्चे लोग खेती का सीजन होने से घर जाता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई नहीं होता उस टाइम पे। मतलब खेती का सीजन कब होता है, जुलाई में, और बंद कब होता है स्कूल, जुलाई में। जून जुलाई में स्कूल कॉलेज सब बंद रहता है, क्योंकि खेती का टाइम होता है उस टाइम पे। अभी धान काटने का सीजन है, अभी भी स्कूल बंद है, अभी धान काटने का सीजन है, अभी स्कूल बंद है। मतलब वो इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था, और इसी हिसाब से जो फ्यूचर प्लानिंग किया गया था, इसी हिसाब से प्लानिंग किया गया था। सो विलियम एडम्स रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या व्हेन इट वाज पब्लिश दैट इज इंपॉर्टेंट।
But question is there, he did not support Western education. Okay, William Adams was against English education. He supported Indian education. But unfortunately, his report was not fully accepted. उन्होंने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था, जैसे फ्री पढ़ाई होता था तो फ्री पढ़ाई नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्री स्कूल में पैसा फीस लेना चाहिए, वो रिकमेंडेशन दिया था. सेकंड रिकमेंडेशन दिया था स्कूल का गुणोत्सव जो होता है अभी, तो गुणोत्सव जैसा गुणोत्सव करने के लिए दिया था, रिकमेंडेशन दिया था. बहुत सारे बोलते रहेंगे तो आ जाएगा रिपोर्ट. So William Adams report, only this much is enough. Now come to Wood's dispatch. Wood's dispatch. The next step concerning English education was taken by Charles Wood, President of Board of Control. Okay, he sent a recommendation, and this recommendation came to be known as, this is Sir Charles Wood. Sir Charles Wood. And his recommendation came to be known as Wood's dispatch. तो इन्होंने क्या बोला था इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ही गेव सर्टेन recommendation. Number one, the primary objective of the government was to provide Western education through the medium of English. इन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश एजुकेशन को, वुड्स ने, सर चार्ल्स वुड ने. बट द एजुकेशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज बैलेंस, ही ट्राइड टू बैलेंस द रिपोर्ट. ओके, बैलेंस किया क्या, बोला कि लोअर लेवल में वर्नाकुलर सिखाओ, हायर लेवल में इंग्लिश मीडियम सिखाओ. ओके, ही गेव द टर्म, एक बच्चा इंग्लिश बच्चा तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकता जब तक वो लैटिन नहीं सीख सकता. लैटिन इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंग्लिश. तो सेम वे ए स्टूडेंट कैन नॉट लर्न इंग्लिश until he will learn his own mother tongue. He said by Sir Charles Wood. That means he said that before a student will learn English, he should learn his mother tongue. So इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था. इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? यस, छोटे बच्चों को वर्नाकुलर में सिखाओ, बड़े बच्चों को इंग्लिश में सिखाओ, एंड इट वाज एक्सेप्टेड. ओके, till many years before this was only till class 5 there was no English. अभी कुछ साल ही हुआ है जो मतलब इंग्लिश क्लास 1 से शुरू किया है. अब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग के टाइम में क्लास 4 या 5 से इंग्लिश का शुरू होता था, हम लोग छोटे थे. लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तो क्लास 1 से इंग्लिश है. बट दिस वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, दैट लोअर लेवल वर्नाकुलर, हायर लेवल इंग्लिश. Primary school to be open in villages. Every village should have primary school, and high school should be there in one district. One high school in every district. Every district should have at least one high school. Said by Sir Charles Wood. क्योंकि उस टाइम स्कूल होता ही नहीं था. एक स्कूल खुला मतलब बहुत बड़ा बात है. जैसे अभी यूनिवर्सिटी, पूरा गुवाहाटी में एक ही यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट वाला, प्राइवेट तो बहुत सारे, गवर्नमेंट लेकिन एक ही है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. तो वैसे उस जमाने में था, मतलब अभी आज से कम 50-100 साल बाद शायद पूरा हर गली में यूनिवर्सिटी हो सकता है, मे बी. मैंने एग्जांपल बोला, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग चीज़ है. लेकिन उस जमाने में क्या था, स्कूल सिर्फ एक होता था. जैसे अभी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वैसे ही स्कूल सिर्फ एक होता था. पूरा गुवाहाटी का लोग सिर्फ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना पड़ता था, मतलब स्कूल पढ़ने के लिए. अभी तो बहुत सारा हो गया, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी है, कॉटन भी है, उसके बाद ये रॉयल ग्लोबल है. तेजपुर तो गुवाहाटी में नहीं है ना, वो तो बाहर है. मैं गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ. तो गुवाहाटी में अभी हम लोग का 3-4 तो हो चुका है. लेकिन उस जमाने में क्या था, वैसे मतलब जैसे एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वैसे उस जमाने में सिर्फ एक ही हाई स्कूल होता था पूरा गुवाहाटी में. वर्नाकुलर स्कूल, हाई स्कूल. Primary school had to be open in every village and high school in every district.
Universities were to be opened at Kolkata, Madras, and Bombay. And by this act, Kolkata University was opened. Okay. और हम लोग असम का जितना भी मैट्रिक होता था कोलकाता यूनिवर्सिटी कराता था टिल 1948 कोलकाता यूनिवर्सिटी यूज्ड टू कंडक्ट मैट्रिक इन असम कोलकाता मद्रास एंड बॉम्बे till 1948 cotton college was also under kolkata university last an education department should be set up in each province to supervise and standardize education in the province. This one remember. Which act is called Magna Carta of Education in India? Wood's Dispatch is known as Magna Carta of English Education in India. मतलब इनका ही एक्ट को ही मतलब टिल ब्रिटिश एंड रूल का खत्म होने तक इनका एक्ट को माना गया था. Sir Charles Wood, very important person. Done. Hunter Commission. These were the various acts passed by the British government relating to education. 1854 के बाद नेक्स्ट रूल पास किया गया था 1882 में हंटर कमीशन. हंटर कमीशन लेकिन दो है, कंफ्यूज मत होना. और एक हंटर कमीशन है चलियन वाला बाग मैसेकर के बाद भी हुआ था और एक कमीशन जिसको हंटर कमीशन बोला जाता था. ये अलग है वो अलग है. सर विलियम हंटर वाज द मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु वाज अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय लॉर्ड रिपन. ब्रिटिश लोगों में से सबसे अच्छा यही था. सर विलियम हंटर फोटो इज गिवन देयर. ब्रिटिश लोगों में से सबसे अच्छा जो ब्रिटिश बोला जाता है मतलब जितना भी ब्रिटिश लोग आए थे सब लोग तो खराब ही था. दो ही अच्छा था, एक बेंटिंग और एक रिपन. बेचारा का नौकरी भी गया इंडियन लोगों के लिए काम करने की वजह से उसका रिपन का. As the chairman of Indian Education Commission in 1882 improved the development of education in India. Recommendation क्या क्या recommend किया? Number 1. It suggested the use of vernacular language at primary level. This was continue only. जो सर चार्ल्स वुड ने बोला था वही इन्होंने बोला कि प्राइमरी लेवल में क्या रहना पड़ेगा वर्नाकुलर लैंग्वेज. It also suggested Indianization of primary education. Indianization means no Western language should be taught in schools, primary school. मतलब अगर असमिस भी पढ़ा है तो असमिस में भी मतलब इंग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ाओगे, इंडिया के बारे में पढ़ाओगे. अगर हिंदी भी पढ़ा रहे तब भी इंग्लैंड का हिंदी नहीं पढ़ाओगे, मतलब इंग्लैंड का जो किसी शहर का नाम नहीं पढ़ाओगे, यहाँ पे इंडिया का बारे में पढ़ाओगे. Indianization, that means Indianization of education. Okay, it was suggested by Sir William Hunter. मतलब उस जमाने में क्या होता था बुक्स को ट्रांसलेट करके हमारे सपोज किसी जर्मनी का किसी आदमी के ऊपर बुक लिखा जाता था उसको ट्रांसलेट करके यहाँ का बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता था. The Hunter Commission stopped this. He suggested that only Indians should be taught. Only about India should be taught in primary level. Indianization of primary education. The responsibility of providing primary education and maintaining elementary school laid on the local boards like district council and municipal boards. Slowly government wanted to remove itself from education and now it gave the duty of education to municipal council. It also suggested that secondary schools should be handed over to private enterprise. सब जितना भी हाई स्कूल था सब स्कूल को प्राइवेट हाथ में दे दिया, प्राइवेट स्कूल बना दिया. And government will give only fees, salary to teachers. Otherwise, government will not control the school. Teacher training schools should be established. Important है सिर्फ ये चेयरमैन कौन था हंटर कमीशन. और इम्पोर्टेंट सेकंड इम्पोर्टेंट है कब फॉर्म हुआ था हंटर कमीशन. बाकी रिकमेंडेशन आज तक नहीं आया है. One more point you write. I am not given here.
सेक्युलर एजुकेशन इंपॉर्टेंस वाज गिवन ऑन सेक्युलर एजुकेशन, मतलब रिलीजन नहीं पढ़ाएगा स्कूल में, ये अभी तक चल रहा है. ओके, दिस वाज फ्रॉम दैट टाइम ओनली दैट रिलीजन विल नॉट बी टॉट इन स्कूल. पढ़ाया जा रहा है लेकिन मतलब इसमें वो नहीं बोल रहा, मतलब ये 19 का बात कर रहा हूँ. रिलीजियस एजुकेशन वुड नॉट बी गिवन इन स्कूल, मतलब स्कूल में अगर सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई भी स्कूल में तो आप लोगों को वो नहीं करा जाता, मतलब सपोज मिशनरी स्कूल चल रहे हैं तो मिशनरी स्कूल में हिंदू पढ़ रहे हैं तो मतलब उन लोगों को चर्च नहीं जाना पड़ेगा. मिशनरी स्कूल में जैसे बहुत सारे मिशनरी स्कूल होते हैं उसमें पढ़ रहे हैं, अगर कोई हिंदू स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई दूसरा रिलीजन का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको जरूरी नहीं होता है कि उसको मतलब वो हिंदू रिलीजन का जो अगर पूजा हो रहा है कुछ हो रहा है उसमें बैठना ही पड़ेगा. कर अलाउ नहीं होता, मगर कोई कंप्लेन करेगा, कोई एक्शन हुआ तो एक्शन होगा उसमें. अगर कंप्लेन नहीं कर रहे तो अलग बात है, अगर कंप्लेन हुआ तो एक्शन होता है. दैट मीन्स इन रिलीजियस स्कूल्स दिस कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन स्कूल्स. डन. नेक्स्ट, नाइट स्कूल वेयर टू बी स्टार्टेड. नाइट स्कूल, जो बच्चा पढ़ नहीं सकते दिन में वो उसके लिए रात का स्कूल खोल दिया. नाइट स्कूल्स वेयर टू बी स्टार्टेड. राइट इट लिख लो ना, मैं लिख तो लो, मैं बोल रहा हूँ. रात को पढ़ा, मतलब 7-8 बजे तक रात को पढ़ाते थे. नहीं मतलब जो काम करते थे ना बच्चे लोग, खेती करते थे उन लोगों के लिए रात को. उन लोगों को बताए हम लोगों को क्या सर दर्द कर रहे, वो लोगों को बताए. सर विलियम हंटर. Important is only Sir William Hunter. And when was the Hunter Commission established? सर विलियम हंटर नहीं है, कब ये कमीशन कब हुआ था तब वो वाला क्वेश्चन आएगा. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904. This act was based on the recommendation of the Indian University Commission 1902 led by Sir Thomas Relic. Okay, this act introduced government control over the universities. अभी भी है, जितना भी यूनिवर्सिटीज है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट का कंट्रोल में होता है. यूजीसी ये तो यूजीसी बोले कुछ है. The school had to be recognized by the universities and rules and regulations were framed for this purpose. Okay, all the schools they were brought under the university control, क्योंकि उस टाइम में बोर्ड होता नहीं था, सीबीएसई सेवा ये सब बोर्ड नहीं था, तो सारे एग्जाम कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के ऊपर होता था. The act established rules and procedure for conducting exam and evaluating students. It set guidelines for examining patterns, making schemes and awarding of degrees and certificates. This act was criticized by the nationalists. Important CBA. Gopal Krishna Gokhale, what do you call this act? Retrograde measure. And when was this act passed? This one you have to remember, 1904. सिर्फ इसका क्रोनोलॉजी आता है, ज्यादातर आज तक सिर्फ क्रोनोलॉजी आया हुआ है. चार्टो एक्ट देगा, कब पास किया गया था वो याद रखना पड़ेगा. रेट्रोग्रेडिंग मतलब ये रिट्रोग्रेड मीनिंग होता है बैकवर्ड, पीछे जाना. रेट्रोग्रेड जो वर्ड लिखा है तुम लोगों ने, इसका मीनिंग होता है बैकवर्ड. लॉर्ड कर्जन फोटो इज गिवन. फटाफट खत्म करना है, लंबा जा रहा है. सेटलर कमीशन, ये सब नोट्स एक भी नहीं आता है, सिर्फ आता है कब हुआ था क्या हुआ था. सेटलर कमीशन व्हेन इट वाज फॉर्म 1917, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से. सेटलर कमीशन व्हेन इट वाज फॉर्म, दैट मच इज इंपॉर्टेंट. In 1917, the British government appointed a commission under Dr. M.E. Sadler to look into the problems of Calcutta University. So what it recommended? 12-year school course, जो अभी भी है 10 से 1 से लेकर 10 तक, अभी तो 12 कर दिया, 14 हो गया. 12-year school course, nursery to 10.
उसके बाद नर्सरी टू 10 होते हैं ना, उसका इंग्लिश मीडियम में नर्सरी टू 10 हो गया. Students should enter university after an intermediate stage, that is class 12. After class 12 only they can study 12 years rather than matriculation. ये चीज अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ही आ रहा है. पहले क्या था, क्लास 10 के बाद तुम लोग कॉलेज पढ़ने जाते थे. अभी ये हो गया रूल्स, क्लास 10 के बाद तुम लोग स्कूल में ही पढ़ोगे. क्या लिखा गया है? इंटरमीडिएट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट? क्लास 12. क्लास 10. नाउ स्कूल एजुकेशन इज फ्रॉम नर्सरी टू 12. अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या लग गया है, मैट्रिक उठा दिया है. 10 अभी 10 से पास करके फिर 12 भी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्कूल से आउट हो गए. पहले क्लास 10 पढ़ के निकल जाते थे बच्चे, बोला हाई स्कूल ही होता था, हाई सेकेंडरी नहीं होता था. अब हायर सेकेंडरी करते हैं. For a 3 years degree program, this was done to prepare the students for university stage. सेटलर कमीशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बहुत सारा मिलता है इसमें. मेन एम इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टेज. स्कूल से मतलब बच्चे लोग यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए ट्रेनिंग हो जाएगा. सेकंड, रिलीव यूनिवर्सिटीज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ओके, हायर सेकेंडरी से ही लोग कॉलेज पढ़ते था पहले, तो अभी ये वाला सिस्टम उठा दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन टू दोज हु डू नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी. A separate secondary and intermediate education board, the SEBA, CBSE, this is called NCRT. An education board should be established to administer and control secondary, intermediate education. Female education, लड़के लोग एजुकेशन शुरू किया गया. Applied to scientific and technological education and teacher training, including that of professional and vocational college. Important है सिर्फ ये. Settler Commission when it was appointed. Getting? When was Settler Commission appointed? 1917. This is important. और सेटलर कमीशन और ये आ सकता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिमिलर टू विच कमीशन? अभी जो एनईपी 2020 लाए गए, कुछ कुछ सिमिलरिटी किसके साथ मिलता है? पूरा नहीं मिलता है. 10% भी अगर मिल रहा है ना तो मतलब मिलता है बोलते हैं. जरूरी नहीं कि तुमको 50% नहीं मिलना पड़ेगा. अगर 10% भी अगर मिल रहा है ना, जैसे नंबर 1 पॉइंट मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई 12 तक स्कूल में होगा, उसके बाद ही बच्चा कॉलेज पढ़ने जाएगा. वो रूल बनाया गया था 1917 में. अभी 100 साल बाद वापस अभी का गवर्नमेंट ने बना रहा है ये रूल. Mixture. So these 2 points you have to remember. 1917, when was the Settler Commission appointed? Second, this number 1 point. आज खत्म करना है. शॉर्ट शॉर्ट लिखो, बाकी खत्म कर. लंबा, बहुत लंबा जा रहा है. Next, Gokhale Bill. Write it. Gokhale Bill on primary education. ये अभी तक नया है लेकिन आने का बहुत चांस है. Gokhale Bill on primary education. अभी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसने गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था. ये लिख लो. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर दिस गोखले बिल. गोखले समझ गया ना कौन है गोखले? वेबसाइट गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. When was this bill introduced? 1910. 1910.
ज्यादातर वही इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी। 2-3 पॉइंट लिख लो, बाकी नहीं चाहिए ज्यादातर। नंबर 1, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर बॉयज, नॉट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए नहीं था ये, क्योंकि उस टाइम लड़की लोगों को पढ़ाता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये चीज का। फॉर बॉयज, लड़की लोग के लिए भी था लेकिन कम था। एज 6 to 10 years, अभी 14 years कर दिया है। एज 6 to 10 years बॉयज, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बट दिस बिल वॉज कैंसल्ड, बिल पास नहीं हुआ। बट दिस बिल वॉज कैंसल, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता था, कोई रेडी नहीं था फ्री एजुकेशन देने के लिए। नहीं, स्कूल चलेगा ही नहीं, फ्री कर दिया था। उस टाइम सरकार नहीं चलाता था ना स्कूल, अभी सरकार चला रहा है। Two, three times Gokhale tried to pass the bill, but bill was failed. Okay, so ultimately only you have to remember the chronology. मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लोगों को chronology याद रखना है। नेक्स्ट, हार्ट टॉक कमिटी, 1929। हार्ट टॉक कमिटी, बच्चों का स्कूल एंट्री एज 4 years किया, लिख लो। चिल्ड्रन एजुकेशन स्टार्ट एट 4 years। Chairman was Sir Philip Hartog. Sir Philip Hartog was the chairman. Children education should start at 4 years. Number 2, school holidays to be adjusted. School holidays to be adjusted according to season and occasion. कभी पूजा होगा, कभी क्या होगा, इसलिए सीजन और ओकेशन देख के छुट्टी देने के लिए बोला। Number 3, good salary for teachers. Good salary for teachers to encourage them to work. To encourage them to work. To encourage them to work. हो गया, नीचे ओवर द नेक्स्ट, खत्म करना है। 2 पॉइंट रह गया, खत्म हो जाएगा। वर्धा स्कीम, जितना भी आ रहा है ये सब सीट उसमें आ रहा है। ऑल दिस आर क्रोनोलॉजी। वर्धा स्कीम, idea was of Mahatma Gandhi. Okay, this idea was of Mahatma Gandhi. ये वर्धा स्कीम का आइडिया महात्मा गांधी का था। और रहेंगे ना राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता है भाई। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, idea of Mahatma Gandhi written. That means and then write number 1.
And before writing number one, right? Who prepared the report? आइडिया तो महात्मा गांधी का था, रिपोर्ट किसी और ने बनाया था. इसका रिपोर्ट किसने बनाया था याद है? डॉक्टर जाकिर हुसैन. Who was he? डॉक्टर जाकिर हुसैन. Who was he? बोलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? फेमस पर्सन है तो नाम, वैसे तो सिंपल आदमी नहीं है. ये लेकिन कोई वो नहीं था, ओके, एक्ट नहीं था, लॉ नहीं था, सिर्फ ऑब्वियसली महात्मा गांधी कहाँ, ये लोग गवर्नमेंट में थे ही नहीं. नहीं पता. जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट नहीं बने थे कभी. कौन थे ओके? रीता, नाम को निशान है. हेलो रीता, कैन यू हियर? হয় স্যার শুনি আছো ओके, তোমার নাম को निशान है डॉक्टर जाकिर हुसैन. স্যার নামটো শুনিছিলো কার লগত নাম को निशान? फेमस पर्सन हो तो खरु नाम ना देन. ओके, राइट इट व्हाट टू से. নিজে বিচাৰি বাৰু মই কি কৈ থাকিম. राइट. Mother tongue to be the medium of instruction. That is vernacular. Mother tongue to be the medium of instruction. Free and compulsory education. Free and compulsory education for children up to uh, not for children, this one like this you write. Free and compulsory education for 7 years. मतलब बच्चा जब तक 7 साल पढ़ेगा नहीं स्कूल में तब तक फ्री रहेगा, चाहे वो 5 साल से पढ़े, वो चाहे 6 साल से पढ़े. मतलब उसका 7 years जब कंप्लीट होगा तब तक उसका फ्री रहेगा. Okay, not age 7 years. Okay, so that's why you write free and compulsory education for 7 years. For 7 years. मतलब जब से वो पढ़ना शुरू करेगा, तो वो तुमने 7 साल से पढ़ना शुरू किया स्कूल में, तो मतलब 14 साल तक तुम्हारा पढ़ाई फ्री है. 15 साल से तुम्हारा पढ़ाई में पैसा लगेगा. ओके, तो अलग बात है, उस टाइम में तुमको एडमिशन में मिलना पड़ेगा. नंबर 2. नंबर 3, क्राफ्ट एजुकेशन, मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन वाज गिवन प्रेफरेंस. क्राफ्ट एजुकेशन गांधी, क्राफ्ट एजुकेशन वाज गिवन प्रेफरेंस. महात्मा गांधी ने बोला था. Dignity of annual labor, this are not it. So many points on it. क्या क्या सब्जेक्ट बोला था? सब्जेक्ट भी लिख लो, कुछ नहीं आता है, कभी सब्जेक्ट लिखा ही नहीं. क्या क्या सब्जेक्ट रहा था उन्होंने? नहीं. नंबर 1 क्राफ्ट एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट था. क्राफ्ट एजुकेशन में क्या क्या आता था? स्पिनिंग आता था, कारपेंट्री आता था, फूड एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, लेदर वर्क, फिशरी, होम क्राफ्ट, ये सब था. सिर्फ क्राफ्ट एजुकेशन लिखो शॉर्ट में, बहुत सारे. नंबर 2 मदर टंग, मतलब जो तुम्हारा मदर टंग है, सब असमिस है तो असमिस, बंगाली है तो बंगाली, नेपाली है तो नेपाली, वैसे वाला. मदर टंग हिंदी है तो हिंदी. नंबर 3 मैथ्स. क्या क्या सब्जेक्ट्स था? मैथ्स नहीं, इंग्लिश था. प्राइमरी में इंग्लिश नहीं था. मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस. This was for primary level. Okay, primary level there was no English medium. Science, Hindustani, Hindi and Urdu mixed together. Hindustani,
This was done to bring communal unity in India. Hindi plus Urdu, Hindustani together. Music, drawing, and last physical exercise. This was the सब्जेक्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स थे पढ़ाने के लिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बाद में, वो अलग बात है। सिर्फ ये प्लान था। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लोगों को ईयर्स याद रखना पड़ता है, क्रोनोलॉजी आता है ना, इसलिए क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये सब लिखा दिया। लेकिन इस स्कीम का भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ बाद में, वो अलग से, उसके बाद बातें खत्म हो गया, लास्ट खत्म, उसके बाद चैप्टर भी होता है, आज का क्लास भी खत्म, टॉपिक खत्म होने वाला है। वर्धा स्कीम हो गया। सर्जेंट प्लान, लास्ट पॉइंट, ये ब्रिटिश रूल का एकदम लास्ट में हुआ था, ये कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, लास्ट में हुआ था ना, ब्रिटिश रूल खत्म ही हो गया था उस टाइम तक। 1944, द सर्जेंट प्लान और द सर्जेंट रिपोर्ट, इट इज ऑफन कॉल्ड द सर्जेंट रिपोर्ट। named after Sir John Sargent. Sir John Sargent. Important because chronology. ये सर्जन प्लान आया हुआ है, वर्धा स्कीम एग्जाम में, यूपीएससी में वर्धा स्कीम पूछ चुका है, सर्जन प्लान पूछ चुका है, हट्टा कमेटी अभी तक नहीं पूछा है, सेटलर कमीशन पूछ चुका है, और हंटर कमीशन, ये 4 क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, आगे पीछे करके देगा, बोलेगा कौन आगे हुआ था। गेटिंग? सर्जन प्लान, वर्धा स्कीम, settler commission, plus hunter commission. This 4 will be given mixed up, and they will ask you to just chronologically order it and arrange in chronological order. बाकी नहीं आता है अंदर क्या पॉइंट्स लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो ऐसे ही लिखा दिया तुम लोगों, टाइम पास जैसा है वो, बाकी अंदर वाला नहीं आता है। सिर्फ तुम लोग का मेन चीज आता है कि ये सब कब कब हुआ था, ये सब कब कब हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा। टाइम पास तो कोई चीज नहीं होता है, मेंस में काम आएगा। टाइम पास तो कोई चीज भी टाइम पास नहीं होता है हिस्ट्री में, मेंस में काम आएगा। बट what you have to remember is chronological order. For prelims, chronological order is important. So write it. A recommendation. What recommendation it gave? Sergeant plan or sergeant report. Number 1. Okay, number 1, right? Uh, Pre-primary education. First you give like this heading. Primary level you give. Primary level. Then you give pre-primary education. First you give heading primary education, primary level. प्राइमरी लेवल एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन देता है, 2 पॉइंट्स लिख लो, फिर हायर सेकेंडरी। नंबर 1, प्री प्राइमरी लेवल 3 to 6 years, जो अभी हम लोग प्री स्कूल बोलते हैं, 3 to 6 years। एक बच्चा प्री प्राइमरी लेवल में 3 to 6 years में पढ़ेगा। बेसिक लेवल 5 to 6 up to 14, 5 to 6 up to 14 years, free and compulsory, nothing will be there, free and compulsory education। Now one more point you added, female teachers should teach primary students, female teachers should teach primary students, high school,
Next, high school rate. সার্জেন্ট রিপোর্ট লিখে আছে কারণ আছে মানে মেন্সত খুদিব পারে সার্জেন্ট রিপোর্ট secondary level secondary education that is high school for 6 years, that means after 14 years when the children will reach, then up to 6 years age ko anek, this is the time period. Home science for girls subject, home science for girls, English compulsory subject, English as compulsory subject along with mother tongue जिनको वर्तमान हमारे मैट्रिक चले ओके जो अभी वर्तमान हमारे मैट्रिक लेवल में होता है इंग्लिश रहता है उसका मदर टंग एक सब्जेक्ट रहता है नेक्स्ट ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल 3 years university course 3 years university course मेंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए तो एक भी नहीं चाहिए सिर्फ क्रोनोलॉजी 3 years university course second UGC to be established Universal University Grant Commission UGC to be established okay this is enough many are there but not given all okay this is all about education yeah,